So students, let's start. Previous lecture was marketing research introduction, and today we are going to start our second chapter, that's process of marketing research. With constant change being the norm in marketing and business, one thing remains the same: the need for marketing research. Marketing research is a helpful tool for organizations to better identify marketing strategies and evaluate business research using data. Just as you wouldn't go on vacation without making any plans, you shouldn't design marketing strategies without backing them with research and data. In short, the marketing research process is the backbone of informed business and making decisions. It means आप कोई भी काम बगैर प्लान के नहीं कर सकते. अगर आपने इवन छुट्टियों पे जाना है, वेकेशन पे जाना है, समर वेकेशन, विंटर वेकेशन पे जाना है, तो यू मस्ट मेक अ प्लान, where to go first, then what to do, and when to return back. So similarly, एक well organized और business approach रखने वाली firm कभी भी marketing research को नहीं छोड़ती. It's a continuous process. मार्केटिंग रिसर्च हर वक्त जारी रहनी चाहिए. आप एक दफ़ा करके उसको छोड़ नहीं सकते, बिकॉज मार्केट कंडीशंस आर चेंजिंग रेगुलरली. You might be surprised to hear that marketing research is one of the first thing that organizations cut from their marketing budgets because of the high time and sometimes monetary investment. This is not the best decision, especially when your company is planning to launch a new product or venturing into a new market. Marketing research doesn't have to be expensive if you do it right and follow the right process. अब मोस्टली मोस्ट ऑफ द कंपनीज हमारे मुल्क में या ख़ास तौर पर पाकिस्तान में मार्केटिंग रिसर्च पर पैसा या टाइम खर्च नहीं करती. उनका ख्याल है कि ये बहुत ज़्यादा महंगा है, इसमें टाइम कंज्यूमिंग है या पैसा बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा है. तो लेकिन फैक्ट ये है कि जब भी आप कोई नई प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं या आपकी सेल कम हुई है और उसकी वजह मालूम करना चाह रहे हैं और सेल बढ़ाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए लाजमी है कि आप मार्केटिंग रिसर्च करें. उसके बगैर आप उस तरह से सक्सीड नहीं कर सकते जिस तरह से मार्केटिंग रिसर्च के साथ कर सकते हैं. अगर ये सही टाइम पे की जाए और सही प्रोसेस को फॉलो किया जाए तो ये बड़ी यूजफुल चीज़ है. मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेस जो है वो एक से ज़्यादा स्टेप्स पे मुश्तमिल है. समटाइम्स आप 9 स्टेप्स भी अडॉप्ट कर सकते हैं, 8 स्टेप्स भी अडॉप्ट कर सकते हैं, 4 5 6 7 वट एवर यू. Here we will discuss the 5-step marketing research process. Right? What are five? What is the first step? Define the problem or opportunity. We will discuss all these five one by one. Second is develop your marketing research plan. Number three, collect relevant data and information. Number four, analyze data and report finding. Number five, put your research into action. जब आपने रिसर्च मुकम्मल कर लिए, अब उस पे उसकी इम्प्लीमेंटेशन का टाइम आ गया है. So we are going to discuss all these steps one by one. Let's start the first one. First one is define the problem or opportunity. The most important part of the marketing research process is defining the problem. In order to do any research and collect data, you have to know what you are trying to learn from the research. In marketing research, defining the problem you need to solve will determine what information you need
and how you can get the information. This will help your organization, clarify the comprehensive problem or opportunity, such as how to best address the loss of market share or how to launch a new product to a specific demographic. इस जब आपने प्रॉब्लम को सही तरह से डिफाइन कर लिया तो बड़ा आसान है कि आपको जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि इस वक्त आपकी सेल्स कम हुई है, आपका मार्केट शेयर कम हुआ है, या आप नई प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं, या आपने किसी प्रोडक्ट में मॉडिफिकेशन की है और उसके बाद उसको टेस्ट करने मार्केट करना चाह रहे हैं, तो अगर आपने मार्केटिंग रिसर्च कर ली है, डेटा कलेक्ट कर ली है, तो उसके बाद बड़ा आसान हो जाएगा कि किसी नए एरिया में फर्ज करें आप एक अपनी पहले आप कंदकोट, शहदादकोट और जैकाबाद में अपनी चीज को मार्केट कर रहे थे, नाउ यू वांट टू मूव टू बिग सिटीज लाइक सक्कर एंड हैदराबाद, कराची. तो सो यू नीड टू सर्च, you need to gather data from all these cities, whether what will be the effect, what will be the response to your new product in these cities. So develop questions that will allow you to define your problem or opportunity and examine all potential causes so that the research can be cut down to the information you actually need to solve the problem or determine what action to take regarding an opportunity. Oftentimes, these are questions about who your target market or ideal buyers person. For example, what does your ideal customer look like? ये question हो सकता है. These might include questions about demographics, what their occupation is, what they like to do in their spare time, anything to help you get a clear picture of who your ideal buyer person is. Consider as many variables and potential causes as possible. Most of the management problems are not always easy to research. तो मैनेजमेंट तो क्या उनके प्रॉब्लम डिफरेंट होते हैं और उनको ट्रांसफॉर्म करना होता है अपने रिसर्च प्रॉब्लम में. एग्जाम्पल है कि एक एंटरप्रेन्योर ने, एक फर्म के मालिक ने, सीईओ ने रिसर्चर से कहा कि मेरा प्रॉब्लम ये है कि मेरे एम्प्लॉयज सुबह लेट आते हैं और छुट्टियां बहुत करते हैं. ये एक एग्जाम्पल है. ये मैनेजमेंट प्रॉब्लम है. मैनेजमेंट को ये समझ आ रही है कि मेरे एम्प्लॉयज सुबह के टाइम ऑफिस लेट आते हैं और छुट्टियां भी बहुत ज़्यादा करते हैं, तो मैं क्या करूं. रिसर्चर्स ने 1-2 दिन तक उसको अच्छी तरह स्टडी किया उनके केस को, और उनकी फर्म में जाके एम्प्लॉयज़ को से मिल के, तो सबसे पहले उन्होंने जाके अपने उस सीईओ ऑफ दैट फर्म को बताया, आपका प्रॉब्लम ये हरगिज़ नहीं कि आपके एम्प्लॉयज सुबह लेट आते हैं या छुट्टियां बहुत करते हैं. एक्चुअली आपका प्रॉब्लम है कि आपकी प्रोडक्टिविटी कम है. यू वांट टू इंक्रीज योर प्रोडक्टिविटी. तो दैट इज द रीजन एक्चुअली कि वो लेट आ रहे हैं. आपका एक्चुअल प्रॉब्लम प्रोडक्टिविटी कम है. पहले आप 1000 एयर कंडीशनर्स रोजाना बनाया करते थे, अब लोगों के लेट आने की वजह से आप 800 पे आ गए. तो मीन्स योर प्रॉब्लम इज योर प्रोडक्टिविटी इज लो. तो सिर्फ देखा आपने मैनेजमेंट प्रॉब्लम को कैसे ट्रांसफॉर्म किया हमने रिसर्च प्रॉब्लम में. So most of the management problems are not always easy to research. A management problem must first be translated into a research problem. जैसे हमने ये ट्रांसलेट किया, उन्होंने कहा जी हमारे बंदे लेट आते हैं, तो रिसर्चर ने कहा नो इट्स नॉट योर प्रॉब्लम. योर प्रॉब्लम इज योर प्रोडक्टिविटी इज लो. So you want to increase your productivity, or you want to bring your productivity on its original level, on what it was. So how to write a problem statement. Put the problem in context. What do we already know? तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखने के लिए आपको सबसे पहले आप पता होना चाहिए कि आपको पता क्या क्या है उस चीज के बारे में. फर्स्ट करें आपका
मार्केट शेयर कम हुआ है, दिस इज योर प्रॉब्लम। अब उसके बारे में जो जो आपको इन्फॉर्मेशन है, फर्स्ट करें जी, यू आर मार्केटिंग, यू आर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ वेव्स, और आपकी पहले 100,000 एसीज बिका करते थे, इस तरह आपके 90,000 एसीज बिके हैं। तो सबसे पहले तो आप वो इन्फॉर्मेशन जो आपको पता है वो लिखें। नंबर वन, लास्ट ईयर वी सोल्ड 100,000 यूनिट्स, दिस ईयर वी सोल्ड 90,000 यूनिट्स। नंबर टू, राइट डाउन द सेल ऑफ डॉलर्स इफ यू नो दैट डॉलर्स ने लास्ट ईयर इतने एसी बेचे, इस साल उन्होंने इतने बेचे, हायर ने इतने बेचे, उसने इतने बेचे। जो मेजर शेयर होल्डर्स हैं उनका आप डेटा लिखिए। मार्केट में नंबर ऑफ डीलर्स जो आपको पता है कितने हैं, हमारे कितने हैं, आपके कितने हैं, उनके कितने हैं, ये सब कुछ आप लिखें। तो सो पुट द प्रॉब्लम इन कॉन्टेक्स्ट, व्हाट डू वी ऑलरेडी नो। नंबर टू, डिस्क्राइब द precise issue that the research will address, means what do we need to know। अब मुख्तसर सा ये लिखें कि हम चाहते क्या है जानना। पहले क्या था, जो हमें पता है उसको लिखें। अब प्रिसाइजली लिखें कि हम क्या चाहते हैं जानना, क्या रिसर्च करना चाह रहे हैं। नंबर तीन, शो द रेलेवेंस ऑफ द प्रॉब्लम, व्हाई डू वी नीड टू नो, किस लिए, व्हाई डू वी नीड टू रिसर्च। फर्स्ट ऑफ ऑल, write down what you know. Next, what do we need to know? Number three, why do we need to know? Number four, set the objectives of research. What will you do to find out? Objective क्या होंगे, वो किस लिए, मतलब आपने पता तो कर लिया, लेकिन आप उसके बाद what are the objectives of research? What will you do to find out? आपने डेटा इकट्ठा कर लिया तो उसको करोगे क्या। ये चार चीजें आपके ज़हन में अगर आ जाती हैं तो सो आपका मैनेजमेंट प्रॉब्लम यू कैन राइट डाउन प्रिसाइजली एंड क्लियरली। Another example, management problem, management says salespersons come late in the morning. Similarly, research problem to find reasons to declining sales in Shaddad Court। अब मैनेजमेंट ने कहा है जी सुबह सेल्स पर्सन अपने अपने रीजन्स में लेट पहुंचते हैं, तो रिसर्चर ने कहा नहीं, आपकी शहदाद कोर्ट में सेल कम होगी, दिस इज योर प्रॉब्लम, उसका रीजन हमने मालूम करना है। सो दिस वाज आवर फर्स्ट स्टेप। नंबर टू इज डेवलप योर मार्केटिंग रिसर्च प्लान। आपने सबसे पहले प्रॉब्लम को डिफाइन कर दिया, नाउ डेवलप योर मार्केटिंग रिसर्च प्लान। After you have examined all potential causes of the problem and have used those questions to boil down exactly what you are trying to solve, it's time to build the research plan. Your research plan can be overwhelming to create because it can include any method that will help you answer the research problem, to explore an opportunity identified in step 1। कि जो प्रॉब्लम या अपॉर्चुनिटी हमने पहले स्टेप में डिफाइन की है, उसके लिए कौन सा मेथड हम यूज़ करना चाह रहे हैं, कौन सा प्लान यूज़ करना चाह रहे हैं। मार्केटिंग रिसर्च के बहुत सारे मेथड्स हैं, बहुत सारे प्लान्स हैं। टू हेल्प यू डेवलप द रिसर्च प्लान, लेट्स रिव्यू अ फ्यू टेक्निक्स फॉर कंडक्टिंग रिसर्च। बहुत सारी हैं, हम यहाँ पे दो तीन डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से रिसर्च प्लान है और उसमें से कौन सा हमें अडॉप्ट करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए। नंबर वन इज interview customers. Oftentimes you get the best feedback by using these tactics because you are going straight to the source. This might take the form of a focus group or one-on-one interviews. Use your defined research problem to help select the right people to interview। अब आपने सबसे पहला तरीका ये है कस्टमर्स को इंटरव्यू करना है। अब कस्टमर कौन से को इंटरव्यू करना है और कितने कितने को इकट्ठे करके करना है, ग्रुप की शक्ल में आपने डिस्कशन करके इंटरव्यू करना है, पूछ लेना है, ग्रुप इंटरव्यू भी होता है, और वन ऑन वन। ठीक है, सबसे पहले तो ये डिसाइड करना है कि ग्रुप इंटरव्यू इज रेलिवेंट टू दिस प्रॉब्लम और वन ऑन वन विल बी बेनिफिशियल। नंबर टू,
किस तरह के कस्टमर्स को आपने सिलेक्ट करना है फॉर इंटरव्यू। अब देखें, जो आपके बायर ही नहीं है, जिनकी इनकम ही नहीं है इतनी कि वो आपकी प्रोडक्ट को खरीद सके, उन लोगों को वो आपके पोटेंशियल बायर या बायर नहीं हो सकते। तो सो आपने उन बायर्स को इंटरव्यू करना है जिनका परचेजिंग पावर आपकी प्रोडक्ट परचेज करने के काबिल है, और वो ऑलरेडी परचेज कर भी रहे हैं, लेकिन आपका ब्रांड नहीं। आपका ब्रांड कर रहे थे, अब वो आपका नहीं करते, या आपका ब्रांड उन्होंने कभी परचेज नहीं किया। इन लोगों को इंटरव्यू करेंगे तो इंटरव्यू से क्या आपको पता चलेगा कि why do you prefer XYZ brand? Why don't you prefer our brand? What is the qualities and characteristics in their brands? What qualities and characteristics we are lacking in our brands? Like this, इस तरह के questions होंगे, आपको असल प्रॉब्लम तक पहुंचने में आसानी हो जाएगी। नंबर 2, conduct a survey. Using SurveyMonkey or an other tool, run user tests on your website or landing pages. This is a cost-effective approach that can provide a lot of insight and data on how your customers or potential customers behave or respond to something. Whether it's new messaging or branding or a modified product or service you are thinking about offering. Okay. Simple A/B test can go long way in discovering user behavior. मीन्स आप अपनी वेबसाइट पे या अपने फेसबुक, सोशल मीडिया पे, कहीं पे भी आप छोटा सा सर्वे यस और नो में ले सकते हैं। ठीक है, अच्छा या बुरा में ले सकते हैं, गुड और नीड इम्प्रूवमेंट में ले सकते हैं। तो ये बड़ा आसान होगा, ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है, ये लोगों तक पहुंच भी जल्दी जाएगा, और आपके इसके लिए गली गली, कुछ कुछ, शहर शहर घूमना नहीं पड़ेगा। यूज हीट मैपिंग टूल्स सच एज Hotjar or Lucky Orange, and website analytical tools such as Google Analytical or any other to track results depending on what data you need to collect. ये मुख्तलिफ किस्म के सॉफ्टवेयर्स और इस तरह की चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं सर्विस के लिए। Oftentimes we do all of this work and gather all of the data only to realize that we didn't have to reinvent the wheel because someone had already run a similar credible study or solved the same problem. मतलब ये कि हमें दोबारा व्हील को इजाद नहीं करना, वो ऑलरेडी इजाद हो चुका है, उसकी शक्ल चेंज करनी है। देखना है कि पहले हमारी प्रोडक्ट बिक रही थी, अब क्यों नहीं बिक रही, या हम नई प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए क्या क्या हमारे पोटेंशियल कस्टमर्स मौजूद हैं, क्या उनकी ज़रूरतों को हमारी चीज़ एड्रेस कर रही है। सो हमने सिर्फ उसको इम्प्रूव ही करना है, व्हील दोबारा री इन्वेंट नहीं करना। That doesn't mean you don't need to do any research, but learning about what other organizations have done to solve a problem or seize an opportunity can help you tweak your research study and save your time when considering all of the research options. इसका मतलब ये है कि आपने जिस प्रॉब्लम के ऊपर रिसर्च करने जा रहे हैं, चेक करें कि बाकी बहुत सारी कंपनीज उस पर रिसर्च कर चुकी होंगी, उन्होंने क्या क्या किया। खामखा उस चीज़ के ऊपर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं, जो वो कर चुके हैं उसका रिजल्ट भी आपको मिल जाता है मार्केट में। ठीक है, तो वो दोबारा करने की जरूरत नहीं, उसको टाइम बचाएं, और जो ओवरलुक्ड या रहे हुए एरियाज हैं उन पे आप रिसर्च कीजिए। This is called secondary data because it has been collected by someone else versus the primary data that you would collect through your own research. जब आप दूसरों के रिसर्च का डेटा इस्तेमाल करेंगे तो उसको सेकेंडरी डेटा कहते हैं, और जो आप खुद डेटा कलेक्ट करते हैं उसको प्राइमरी डेटा कहते हैं, जो आप खुद इंटरव्यू करेंगे जाके, या वेबसाइट पे कोई चीज़ आप क्वेश्चन छोड़ देंगे और उसका लोग रिस्पॉन्स देंगे, या आप अपने प्रोडक्ट के बारे में फीडबैक लेना चाहेंगे,
रिव्यू लेना चाहेंगे, तो ये आपका प्राइमरी डेटा होगा। तो ऑलरेडी किसी कंपनी का डेटा यूज करेंगे तो दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी डेटा। नेक्स्ट कम्स collect relevant data and information। तीसरा स्टेप है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है। अब आपने पहले सबसे पहले प्रॉब्लम को डिफाइन कर दिया, उसके बाद पुट योर रिसर्च इनटू, उसके बाद आपने डेवलप मार्केटिंग रिसर्च प्लान डेवलप किया है। अभी कौन सा हमने तरीका इख्तियार करना है। फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया पे आपने क्वेश्चन या सर्वे करना है, इंटरव्यू करना है, तो टेस्ट रन करना है। तो ये तीनों चारों कोई भी आप कर सकते हैं, इसके अलावा भी हो सकते हैं। अब तीसरा इंपॉर्टेंट है कलेक्ट रेलेवेंट डेटा एंड इंफॉर्मेशन। In marketing research, most of the data you collect will be quantitative, numbers or data, versus qualitative। अब मार्केटिंग रिसर्च में जो ज़्यादातर आप कलेक्ट करेंगे वो क्वांटिटेटिव होगा। मीन्स आपकी प्रोडक्ट, आप एक डीलर के पास जाते भी आप कितने हायर के एसीज बेचते हैं, 100। आप डॉलर्स के कितने बेचते हैं, 50। आप वेव्स के कितने बेचते हैं, 100। आप ओरिएंट के कितने बेचते हैं, XYZ। आप उसके कितने बेचते हैं, ABC। तो सो आपका ज़्यादातर डेटा क्वांटिटेटिव होना चाहिए वर्सेस क्वालिटेटिव, विच इज़ डिस्क्रिप्टिव एंड ऑब्जर्वेशनल। कुछ आपका क्वालिटेटिव भी होगा, ऑब्जर्वेशनल भी होगा। आप जब किसी कस्टमर से बात कर रहे होंगे तो उसका जो बिहेवियर, एटीट्यूड उसका होगा, वो डेफिनेटली, ये उसके बारे में जो रिमार्क्स होंगे, एडिशनल रिमार्क्स, ये एक तो ये है कि वो आपकी प्रोडक्ट नहीं खरीदता या खरीदता है, वो कितनी चीज़ें साल में खरीदता है और कितनी किस किस ब्रांड की। तो एक उनके बारे में वो तफसील बताएगा, तो वो क्वालिटेटिव होगा, वो आपकी ऑब्जर्वेशन होगी, उसको आप नोट करेंगे या रिकॉर्ड करेंगे। आइडियली you will gather a mix of two types of data. For example, you might run an A/B test on your website to see if a new pricing tier would bring in more business. In that research study, you might also interview several customers about whether or not the new pricing tier would appeal to them. This way, you are receiving hard data and qualitative data that provide more colors and insight. When collecting data, make sure it's valid and unbiased. You should never ask a research interviewee, "You think that we should offer a higher pricing tier with additional service?" Correct? आप इस तरह से क्वेश्चन इंटरव्यू से नहीं कर सकते। इस तरह से आप उसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि वो आपकी बात का जवाब हाँ में ही दे। आप बायस्ड क्वेश्चन नहीं कर सकते, आपके सारे क्वेश्चन अनबायस्ड होंगे, तो इंफॉर्मेशन भी अनबायस्ड होंगी। फर्स्ट करें, आपका एक फ्रेंड है, उससे आप पूछते हैं हमारी प्रोडक्ट कैसी है, वो आपका दिल रखने के लिए कहेगा बहुत अच्छी है, जबकि वो उसके घर पे जब आप जाके देखेंगे तो आपके ब्रांड की कोई भी चीज़ उनके घर पे नहीं होगी, वो दूसरे ब्रांड यूज कर रहा होगा। मीन्स आपका दिल रखने के लिए दैट बिकम्स अ बायस्ड collection of data या biased question. This type of question is clearly designed to influence the way the person responds. तो ये देखना, आप किसी से पूछें, "You think that we should offer a higher pricing tier with additional service?" Correct? Question भी आप कर रहे हैं। This type of question is clearly designed to influence the way the person responds. Try asking both open-ended and closed-ended questions. For instance, a multiple choice questions asking what income range best describes you. तो instead of asking कि आपकी इनकम कितनी है, ये एक बड़ा पर्सनलाइज क्वेश्चन है, ये नहीं पूछना चाहिए। इनकम रेंज आप दे सकते हैं कि आपकी इनकम 10,000 से 30,000 के दरमियान है, 30,000 से 60,000 के दरमियान है, 60 से 1 लाख के दरमियान है, 1 लाख से 2 लाख के दरमियान है, 2 लाख से 5 लाख के दरमियान है, या 5 लाख से 10 लाख के दरमियान, या 10 लाख से ऊपर है। सो दिस वाज हाउ टू कलेक्ट डेटा। ठीक है, अब नंबर 4, एनालाइज डेटा एंड रिपोर्ट फाइंडिंग।
अब डेटा आपके पास इकट्ठा हो गया, क्या करना है? नाउ दैट यू हैव गैदर्ड ऑल द इंफॉर्मेशन यू नीडेड, इट्स टाइम फॉर द फन part, analyzing data. Although one piece of information or data might jump out at you, ठीक है, क्योंकि आपके पास बहुत सारा इकट्ठा हो गया, जितना आपको रिपोर्ट में लिखना नहीं है उससे कहीं ज्यादा 10 टाइम, 100 टाइम, 50 टाइम, 4 टाइम आपके पास जमा हो गया. इट्स इंपॉर्टेंट टू लुक फॉर ट्रेंड्स एज अपोज टू स्पेसिफिक pieces of information. As you're analyzing your data, don't try to find pattern based on your assumptions prior to collecting data. Sometimes it's important to write up a summary of the study, including the process that you followed, the result, conclusions, and what steps you recommended taking based on those results. Even if you don't need a formal marketing research report, be sure that you review the study and results so that you can articulate the recommended courses of action. Sharing the charts and data you collected is pointless if it doesn't lead to action. अगर आपने बहुत सारे डेटा इकट्ठा कर दिए, अब आपको फॉर्मल रिपोर्ट चाहिए तो आपको उसको बहुत ज़्यादा डेटा को समराइज करना होगा, प्रिसाइज करना होगा, स्पेसिफिक डेटा जो आपको चाहिए वही रखना होगा, बाकी को आपने माइनस कर देना है या उसको आपने समरी बना के पेश करनी. अगर आपको फॉर्मल रिपोर्ट नहीं भी चाहिए तो भी उसके अलावा भी आप उस डेटा को यूज़ करेंगे. और अगर आपने डेटा और सारी ये चीज़ें बना भी ली हैं, देख भी ली हैं, अगर आपने इम्प्लीमेंट नहीं करता तो किसी काम का नहीं. Was your hypothesis proven wrong? Great. That's why you do testing and don't run with assumptions when making decisions. अगर आपका hypothesis कोई भी आपने सोचा था कि ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, गलत साबित होगा, तो that's the actual point. कि अगर वो गलत साबित ना होता तो आप रिसर्च की तरफ ना जाते. That could have a major impact on your organization. It's always better to take the results as they are than to twist the data to prove yourself right. अब सपोज आपके चीफ एग्जेक्टिव ने कहा था कि आपकी सेल आपके रीजन में कम होगी. जीएम सेल्स को कहा चीफ एग्जेक्टिव ने कि आपके रीजन में शहदादकोट में, कंदकोट में, साउथ में, पूरे में, सिब्बी में, जैकाबाद में सेल आपकी कम हुई है. उन्होंने क्या कहा कि हमारे यहाँ इस दफ़ा फसलें अच्छी नहीं हुई. ये जवाब दिया इमीडिएटली विदाउट मार्केटिंग रिसर्च. आप चीफ एग्जेक्टिव ने कहा अच्छा आप मुझे रिसर्च करके बताएं कि एक्चुअल रीज़न क्या है. अब जब आपने डेटा कलेक्ट कर लिया, फार्मर रिपोर्ट बनाने की तरफ जब आप आते हैं तो अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए लाजमी तौर पर ये रीज़न ना बनाइए, ट्विस्ट ना कीजिए डेटा कि वाकई फसलें अच्छी ना होने की वजह से हमारी सेल कम हुई है. नो, अनबायस्डली उस डेटा को रिफ्लेक्ट करें रिपोर्ट में. जो भी रिजल्ट आ रहा है बाद में पता चले रिजल्ट फसलें अच्छी ना होने की वजह से नहीं हुआ, बल्कि हमारे लड़कों ने प्रॉपर मार्केटिंग नहीं की, डीलर्स के ऊपर तवज्जो नहीं दी, कस्टमर केयर पे तवज्जो नहीं दी और दूसरे ब्रांड्स ने हमारा शेयर ले लिया है. पहले जिस दूसरे ब्रांड्स जो है ना 40% शेयर ले रहे थे, इस दफ़ा वो 60% पे चला गया, हमारा 40 पे रह गया. तो सो आपको ट्विस्ट नहीं करना चाहिए सिर्फ इसलिए कि अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए. सो इन 5 स्टेप रिसर्च, marketing research, the fifth and last step is put your research into action. Your research is complete. It's time to present your findings and take action. Start developing your marketing strategies and campaigns. Put your findings to the best. ओके, अब ये कि आपने डेटा इकट्ठा कर लिया सारा. ओके, डेटा इकट्ठा हुआ, उसको एनालाइज भी कर लिया और आपने उसको रिफाइन भी कर लिया, अनबायस्ड भी हो गया. अब क्या करना है कि
कि आपने स्ट्रेटजी भी बना दी, ये डेटा इकट्ठा किया, क्या वजह निकली हमारी रिसर्च की, हमारे सेल कम होने की या नई प्रोडक्ट लॉन्च करने वो कामयाब होगी या नहीं। अब उसके बाद योर रिसर्च इज कंप्लीट, इट्स टाइम टू प्रेजेंट योर फाइंडिंग्स एंड टेक एक्शन। आपने प्रेजेंट कर दी रिपोर्ट की शक्ल में, स्टार्ट डेवलपिंग योर मार्केटिंग स्ट्रेटजी एंड कैंपेन्स, पुट योर फाइंडिंग्स टू द टेस्ट एंड गेट गोइंग। The biggest takeaway here is that although this round of research is complete, it's not over. The problem business environment and trends are constantly changing, which means that your research is never over. The trends you discovered through your research are evolving. You should be analyzing your data on a regular basis to see where you can improve. The more you know about your persons, industry, and company, the more successful your marketing efforts and company will be. When you look at it that way, you should start to wonder why so many organizations don't budget time and resources for making research. Of course, there is a lot more to the marketing research process than these five core steps, but these are enough to go to get you started. Good luck and be sure to share any tips you have discovered for conducting marketing research. अब आपकी मार्केटिंग रिसर्च भी कंप्लीट होगी, आपने रिकमेंडेशन भी दे दी, एक्शन का टाइम भी आ गया। ओके जी, हमारी जो सेल्स कम हुई है तो इस वजह से हुई कि हमारे लड़के प्रॉपर टाइम नहीं दे रहे थे डीलर्स को, आफ्टर सेल में जाके टाइम नहीं दे रहे थे, कस्टमर सर्विस में प्रॉपर टाइम नहीं दे रहे थे। तो जब डिस्कवर हो गया, अब अपनी चीज़ों को अपने ठीक करना है। तो लेकिन ये ओवर नहीं होगी मार्केटिंग रिसर्च, इट्स अ कंटिन्यूड प्रोसेस, कॉन्स्टेंटली ये होता जा रहा है। अगले साल कंडीशंस चेंज हो रही हैं, उससे अगले साल और चेंज हो रही हैं, उससे अलग नस्ल हो। और मार्केटिंग रिसर्च के लिए इन 5 रिसर्च स्टेप्स के अलावा बहुत कुछ है, 6 स्टेप्स, 7 स्टेप्स, 8 स्टेप, 9, 10, सो मैनी। लेकिन अभी सिर्फ आपको स्टार्ट करने के लिए आपको ये 5 स्टेप काफ़ी है। एक आइडिया आपको हो गया कि हाउ टू कंडक्ट अ मार्केटिंग रिसर्च, ये प्रोसेस उसमें ये 5 है। हम आगे नेक्स्ट चैप्टर जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। बाहर कोई भी मार्केटिंग रिसर्च करते हो आपको कोई ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट मिले वो आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, गुड लक, अल्लाह हाफिज़।